स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बजाय प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बढ़ गई है, जो कि 2000 तक नहीं थी। 2000 के बाद आप देखेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की संख्या कम हो जा रही है और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे कैन ऑल्सो कम हियर इन द कंट्री। तो ये मुझे लगता है कि ये भी एक मेजर चैलेंज होने वाला है हमारे सबके सामने कि हम किस तरीके से जो बेसिक चीज़ बाबा साहब ने हम लोगों को दिए वो बेसिक्स पे ही कुठाराघात हो रहा है, तो उसको हम लोग किस तरीके से बचा सकते हैं, ये 2050 तक का हमारे लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा एक सेंस में अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं इसको कि सब लोग मिलके कैसे इस चीज़ को लड़ सकते हैं। तीसरी बात जो चौथी बात मुझे जो समझ में आ रही है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी बहुत बड़ा आघात हो रहा है धीरे धीरे। आप सब जानते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल हो गया है। इंस्टीट्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रही हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंडिपेंडेंटली अगर काम नहीं करेंगी तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप में चैलेंज है। एक समय था जब ये कहा जा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया जाएगा। आपको याद होगा 2000 या 1919 के 1999 के आसपास 1999 में ये बात आ रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जाना चाहिए। लेकिन अब ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपने तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की इतनी संभावनाएं हैं कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरीके से भी मोड़ सकते हैं। और बाबा साहब ने बहुत अच्छे से इस बात को कहा था कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता है, बुरा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता है। जब जो खराब कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, उनकी मंशा, उनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, तो खराब कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है। और अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन खराब बन सकता है अगर जिन लोगों की को उसको इम्प्लीमेंट करने की वो दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है 2050 तक का समय, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का भी बहुत बड़ा समय है। वो चैलेंज है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बचा पाएं। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा कि रिसेंटली एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई है कि किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाना चाहिए। चेंज नहीं किया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाला समय है उसमें ये इंस्टीट्यूशंस को बचाना और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, और ये बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं, वो सेफगार्ड्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस संदर्भ इस बात को इंश्योर कर सकें कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो और ना कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैंडेट है उसको ठीक तरीके से लागू किया जाना चाहिए। Thank you very much. Thank you. Friends and comrades, now time 1:30. The session continue up to 2 o'clock. Already our friends told this meeting we expected 2:30, 2:15 number, but now attendance more than our expectation. Still now 310 delegates attended this meeting. This is good thing.
but the problem of time allotment. So that's why we are thinking about the discussion we give to every organization. For example, in Karnataka, more than 16, 17 organized attend this meeting. And Tamil Nadu also, Andhra, Telangana, or Rajasthan, or UP, Bihar, and etc. So I request to everyone, we will give to 5 minutes. In this time, many intellectuals, many organizers, many experienced persons here, I know. But to limited of time, we request and we consult with our sympathizers, our activists. We have prepared one concept paper. In this concept paper, we are addressing many issues. For example, land, education, health, industry, banking, social justice, attack on constitution, communalization, and etc. So you will suggestion this is enough or any addings, that is also need. In 2 days this meeting, our main concept, we will prepare Dalit agenda, national Dalit agenda. That is our main concept. On this agenda, we will campaign national-wide, state-wide, and grassroots. Tomorrow we will tell that today night we will meet our core leadership, we will discuss and propose tomorrow. So that's why we will give to 5 minutes. Second, in your idea, future activity, that is also need for from our delegates. Third thing, that is your state conditions. For example, in his deliberations, Professor Limbadri sir told, in Telangana, the enrollment of student ratio from our Dalits. So general enrollment 40%, SC enrollment 30%. That is the big achievement. In Kerala, some areas more than general admissions also. That good things is there. So many states, what the condition, for example in UP, the reverse conditions nowadays in UP, attacks on Dalits, attacks on agriculture workers, attacks on women, and etc. That things also there. So I request to every state, you will 1-2 minutes will take, explain what the condition in your respective state also. Now on the suggestion paper, Subhash Niali, she is working in DSMM, she is a senior leader DSMM, all knows. She will speak on some ideas. Comrades, I will finish my intervention in 5 minutes. I just want to say that there are 2 or 3 important points that we need to add to this declaration. तो ये जो हमारी घोषणा है, इसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हमें जोड़ना चाहिए. प्रोफेसर साहब ने काफ़ी मेरा काम हल्का कर दिया, उन्होंने कुछ पॉइंट्स की बात रखी है. देखिए, जितने लोग पहले बोले, उन्होंने सबने कहा है कि जो भी दलितों को और हमारे देश के जो पीड़ित लोग हैं, जो भी उनको अधिकार मिले, और इसमें महिलाएं भी हैं, वो हमारे संविधान से मिले हैं. और हम उस संविधान को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं ताकि वो जो अधिकार हैं वो वास्तव में मिलें. So all the speakers have said that whatever rights Dalits and women and other oppressed communities enjoy in the country today, they come out of our constitution. So what is needed is to strengthen the constitution and implementation of the constitution. लेकिन इसमें जो हम लोगों को बात जोड़नी है वो ये है कि ये जो आज हमारे देश में शासन कर रहे हैं, ये हिंदुत्ववादी ताकतें जो हैं, ये संविधान को मानती ही नहीं है और ये संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करना चाहती हैं. तो ये हमारी एक तरह से सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि अगर संविधान नहीं बचेगा, मनुवादी सोच के आधार पर कानून बनेंगे, नीतियां बनेंगी, तो जो भी समानता की बात होगी हमारे देश में, समाज में, वो ख़त्म हो जाएगी. तो ये मेरे ख्याल से इसमें शुरू में ही आना चाहिए कि ये जो बड़ी चुनौती हमारे सामने, ये मनुवादी नीतियों को और मनुवादी सोच को लागू करने की जो चुनौती है, वो बिल्कुल शुरू में ही आनी चाहिए.
So I would just like to say that the attack by the Hindutwadi forces who are trying to weaken the constitution and bring in Manuvadi ideas and Manuvadi policies and Manuvadi laws also, that should come at the beginning of our declaration, so that the real danger is there in front of us and we can all unite to struggle against that danger. जो दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है वो आज एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है. एक तरफ तो आप जानते हैं आरक्षण को ख़त्म वो करना चाहती है, जो भी सुविधाएं मिली हैं उनको ख़त्म करना चाहती है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से कर रही है. कहीं स्कॉलरशिप को बंद कर रही है, कहीं प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वगैरह वगैरह. लेकिन एक और जो उसका बहुत ही ख़तरनाक षड्यंत्र है वो ये कि जो दलित समुदाय में लोग पहले से ही ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, मैं दलित क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रही हूँ, जो दलित समुदाय हैं जैसे कि आपके आंध्रा और तेलंगाना में हैं, माला माडिगा वगैरह, जो ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुके हैं लेकिन जिनको दलित कैटेगरी में ही रखा गया है और आरक्षण मिल रहा है. अब धीरे धीरे सरकार इस षड्यंत्र को रच रही है कि जो अपने आप को हिंदू नहीं कहता है, वो चाहे दलित हो या आदिवासी हो, उसका आरक्षण का जो अधिकार है वो समाप्त होना चाहिए. इससे जो भयानक बात पैदा हो रही है, एक तो आरक्षण पर हमला, दूसरा धर्म के नाम पर एक ही जो बहुत ही कमज़ोर तबका है दलितों का, आदिवासियों का, उनको आपस में लड़ाया जा रहा है. ये आंध्रा में, तेलंगाना में थोड़ा थोड़ा देखने को मिला है, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, और अभी आपने देखा है मणिपुर में भी ये जो भावना है इसको किस तरह से लागू किया जा रहा है. द सेकेंड वेरी important point that should be mentioned here is that there are many Dalit communities which have become Christian many years ago and they are getting the benefits of reservation. I'm not talking about the other demand for Dalit Christians. Those who are already getting reservation. Now the BJP government has started a campaign that those who are Christians, those who are not Hindus, whether they are tribals or whether they are Dalits, and this will affect your Andhra and Telangana very much, they should be deprived of reservation. They should be deprived of all the constitutional guarantees that they have been availing up till now. And to do this, they are creating bitterness and enmity between Hindus and non-Hindus of Dalit communities and also of Adivasi communities. So their communal campaign, how it is actually going to affect Dalit rights and Adivasi rights, we have to understand that, and how their communal campaign is blinding large sections of India's poor population to the attacks of the BJP government. How is it that they are able to carry out these attacks? I think this should be emphasized. तो ये जो उनका अभियान है और एक तरह से जो सांप्रदायिकीकरण वो हमारे दलित समुदाय और आदिवासी समुदाय का भी कर रहे हैं और बीच में उनके टकराव पैदा कर रहे हैं, इस पर भी इसमें ध्यान देते हुए ये कहना ज़रूरी है कि इनका जो ये सांप्रदायिक अभियान है, ये इनका जो बंटवारे का अभियान है, इसके चलते जो विरोध होना चाहिए इनकी नीतियों के खिलाफ, वो विरोध भी पैदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विरोध करने वालों को वो धर्म के नाम पर बांट रहे हैं. मैं समझती हूँ अगर ये 2-3 बातें और भी आप लोग बताएंगे इस ड्राफ्ट में लाए जाते हैं तो ये ड्राफ्ट और ज़्यादा कारगर और ज़्यादा मजबूत होगा. आपका धन्यवाद. Now Ashish from Himachal Pradesh. Ashish. Next Sister Manju, National Christian Watch. So please come front side. Manju ji, कहाँ है मंजू? Okay. माननीय अध्यक्ष मंडल, आज जो ये हैदराबाद के अंदर 26 अगस्त को जो ये नेशनल समिट हो रहा है, इसमें हिमाचल प्रदेश की तरफ से हमारे जो डेलीगेट्स आए हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशंस के, 3 ऑर्गेनाइजेशंस के आए हैं.
जिसमें HPSC ST OBC हैं, संयुक्त फ्रंट एंड दलित विकास संगठन और दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से। तो जॉइंटली हम इसमें बात रख रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो दलित के स्ट्रगल्स हैं वो निरंतर चल रहे हैं। मोस्टली हमारा हिमाचल के अंदर जो सबसे बड़ी जो समस्या, एक जो वहाँ पे देव प्रथा के नाम से जो देवता का जो चलन है, वहाँ मंदिर के अंदर लोगों को एंट्री नहीं मिलती। इसी के तहत जो वहाँ भ्रष्टाचार वगैरह होता था, उसके तहत मैं शॉर्ट में रखूँगा। जहाँ से हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले जो उसमें सफलता भी हमारे को मिली, एक जिंदान हत्याकांड हुआ था। उस जिंदान हत्याकांड से और उसमें सजा भी उसमें उम्र कैद की हुई है, तो उसको दलित शोषण मुक्ति मंच ने उस मुद्दे को उठाया, अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो अदर संगठन है दलितों के, उनके साथ मिलके। तो धीरे धीरे जब ये चलन शुरू हुआ, तो इसके बाद जब ये एट्रोसिटी एक्ट पहली बार हिमाचल में लागू हुआ, तो उसके पैरेलल एक अलग से संगठन वहां तैयार हो गया, देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के नाम से। ये जो अपर कास्ट के लोगों ने स्वर्ण मोर्चा के नाम से एक संगठन बना दिया और लिटरली उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया जाए। और इसके तहत उन्होंने इसकी जो एक शव यात्रा निकाली और हरिद्वार के अंदर उसकी जो अस्थियां जो वह प्रवेश करवाई वहाँ गंगा नदी के अंदर। तो इस तरीके का एक कैंपेन किया गया। और इसके पैरेलल ही क्योंकि दलित ऑर्गेनाइजेशन का जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर जहां हम काम कर रहे हैं, वहां पे एट्रोसिटीज ज़्यादा होती है। 154 पंचायतें जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो अभी उसमें एक अमेंडमेंट भी वहां पे हुआ, कुछ ट्राइब्स में लोगों को वहां शामिल किया गया। तो इन्हीं 154 पंचायतों के अंदर जब हमने वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो डाटा लिया था, तो उसमें अगर 111 घटनाएं हुई थी हिमाचल प्रदेश के अंदर एट्रोसिटी की, तो 109 या 107 घटनाएं इन्हीं 154 पंचायत के अंदर थी। और ये जो स्वर्ण मोर्चा का और ये ट्राइबल जो के लिए जो डिमांड्स की थी, अब ट्राइबल्स के लिए जो डिमांड कर रहे थे, ये डिमांड करी वहाँ के जो ब्राह्मण थे, वहाँ के जो राजपूत लोग थे उस एरिया के अंदर। और अल्टीमेटली उन्होंने इस अचीव को प्राप्त भी, कामयाब भी इसमें हो गए। हाटी कम्युनिटी के नाम से अब ये शामिल हो गया, क्योंकि इन एरिया के अंदर, सिरमौर के अंदर खासकर सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी 95% के करीब इन्हीं एरिया में हुई है। जैसे 111 केसेज हुए हैं, तो आपका 108 या 109 इन्हीं 154 पंचायतों में हुए। अब ये टोटल जो 154 जो पंचायत है, ये सारी की सारी जो पंचायत से ये ST में बन गई। मतलब कि एट्रोसिटी एक्ट इनडायरेक्टली तो हम कह सकते हैं और रहेगा, लेकिन जो लोग एट्रोसिटी करते थे वो खुद ही ST बन गए। तो जब SC और ST एक साथ हो गए तो एट्रोसिटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जो सामाजिक जो शोषण होता है या जो एट्रोसिटीज होती है तो वैसे ही बरकरार रहेगी। तो इस विषय में भी सोचने की हमारे को आवश्यकता है, क्योंकि अब स्ट्रगल हमारा हिमाचल के अंदर खासकर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में और बढ़ेगा, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट का जो हथियार था, जिस के दम पे हम लोग कामयाब होते थे मुद्दे उठाने में, वो हमारे पास नहीं रहा। तो इस विषय में भी हमारे को गंभीरता से इसमें सोचना चाहिए। दूसरा, उसी जिला के अंदर या हिमाचल के अंदर जो SC और ST की जो समस्या है, क्योंकि हिमाचल और जौनसार बाबर का जो एरिया है, ये ऐसा एरिया है जहां ST के अंदर कास्ट भी है। ST जनजातीय क्षेत्र है, लेकिन वहां कास्ट सिस्टम भी है। तो वो ट्राइबल्स में तो सब आ जाएंगे, लेकिन वहाँ ट्राइबल्स के अंदर कास्ट अलग अलग डिफरेंट कास्ट है SCs की। तो वहाँ का एक ट्राइबल के नाम से तो चलो बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन SCs जो STs के लोग वहाँ पे हैं उन एरिया के अंदर, जैसे हम किन्नौर का डिस्कस कर लें, अभी सिरमौर में हो गया, तो ST के लोग वो SC का वहाँ पे उस तरीके से सामाजिक शोषण करते हैं। तो वहाँ पे चैलेंज आता है कि ये एट्रोसिटी एक्ट तो वहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि SC का लोग ST के ऊपर वो लागू नहीं कर पाएगा। दूसरा, अभी एक चेंज आया इसमें, अभी हमारे सुनील जी शायद बात रखेंगे, श्यामलात लैंड का। श्यामलात कॉमन लैंड जो होती थी 1972 से पहले के जो मालिक होते थे, अभी धूमल गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी 2013 में, तो उन्होंने एक कानून लाया कि जो 1972 से पहले के जो मालिक थे उनको श्यामलाट लैंड वो वापस की जाए। तो इसमें जितने भी पहले से प्रभावशाली लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, वो सारी कॉमन लैंड उनको वापस हो गई। और उसके नतीजे आने अब शुरू हुए हैं, उनके रास्ते बंद कर दिए, तार बाड़ कर दिए। वो घरों के अंदर, अपनी जमीन के अंदर जहां वो काम करते थे उनकी जमीन के अंदर, वहां अंदर एक बंधुआ की तरह काम हो गए। अब ये रिजल्ट्स आने शुरू हो गए कि अगर कोई किसी के, हमारे हिमाचल में बुआरे बोलते हैं किसी का फ्री में काम करना, अगर कोई फ्री में काम करने किसी के घर नहीं जाता,
तो उनका या पानी का सोर्स बंद कर दिया जाता है, उनके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, और खासकर जो उनके पशु होते हैं, गोधन होता है, उसको चराने के लिए कोई जगह उनको नहीं दी जाती। तो इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है। दूसरा, लास्ट में मैं इसमें कंक्लूड करना चाहूँगा कि जो आउटसोर्स पॉलिसी जा रही है, इसमें डेफिनेटली ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी है, दोनों का रवैया इसमें सेम है। तो इस चीज़ के विषय में मैं इतनी सी बात रखना चाहूँगा। बाकी जो भी होगा इसमें लिखित का जो प्रोसेस होगा, हम इसको इन राइटिंग इसको सम्मेलन को दे देंगे। और बाकी धन्यवाद इस सम्मेलन के करवाने के लिए। और बहुत अच्छा ये लगा कि आज इस जो सम्मेलन हो रहा है, कन्वेंशन हो रहा है, इसमें 2050 का जो एजेंडा रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम सभी को स्टेट लेवल पे आगे इस चीज में बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। Next is Sister Manju, then Gurmesh from Punjab. Gurmesh. Jai Bhim. There are 300 people in this hall, and the resounding of Jai Bhim is not equivalent to what the proportion of the people sitting there. Once again, Jai Bhim! Excellent. Good afternoon to all the dignitaries on the podium and all the dignitaries below the podium. I personally consider this moment to be a very fortunate, empowering, a visionary gathering of Dalits. I, being a Catholic nun, represent National Dalit Christian Watch. I'm aware there are some people perhaps who are not really in accordance with the Dalit Christians. I'm aware of it, but I'm not here particularly to speak upon that, but basically addressing the Dalit issue. There are 75% of Dalit Christians who suffer discrimination in our country, not just in a one specific manner. There are 54% Dalits malnourished. There are 37 Dalits who are below the poverty line. Every 18 minutes, there's a crime being committed against Dalits. Every hour, 2 Dalits are burnt alive in this country. And every hour, 2 Dalits are murdered and 11 Dalits beaten up. And every day, 3 Dalit women are being raped. There are a number of statistics, if I were to say, many things. And what we focus basically is on Dalits, Christian discrimination, but I am also here to see a kind of a percentage that is being here, like in the sense the speakers before me have spoken and insisted upon the ratio of girl child, the ratio of women, the ratio of education, the ratio of people who have enrolled in the colleges, institutions, in educational schools, etc. But in contrast to all of that, the percentage of women who are in this hall is very, very low. You look at the percentage of the men sitting here and the percentage of women sitting here. And by saying that, I don't mean that we all of us at the Dalit community need to work in promotion of women percentage, women role, women being outspoken in various issues, because there is a way men look at and the women look at, the feminism and the masculinism. We have constraints of time, I'm not going into details. But the untouchability that is being spoken a bit before still exists very, very large in our country and even in Telangana. Sorry to say that there are a lot of things even in Telangana state that need to be highly improved. It is true that we focus on, certain successes, certain promotions and certain involvement, but we also need to be very realistic in what we actually want to achieve, what we want to implement, what really would like the things to be focused upon. One of the things that I would like to recommend on this August gathering of the stage is Dalit Christian status has to be implemented. And I demand personally that the moment you change your religion, just because you believe in a particular God, just because you choose the religion that you have a freedom to choose, are being ostracized, sidelined, and kept aside. I think this is unfair.
we should not be tolerating. If we are people who are open enough, liberal enough, and believe in our constitution, which is so fundamental to our lives as Dalit community, this is one of the things I strongly believe has to be implemented. And no matter what you choose, what you want to wear, what you want to eat, what you want to practice, your faith is your personal identity and your personal affair. Nobody has a right to impose on anybody else to say, this is what you should do, otherwise we will not. Why should everybody be a Hindu? I suppose we have a lot of castes and creeds and religions in our country which we need to be practicing. And we should have freedom to practice what you want to practice, not what is being imposed upon you. And this is one of the things I would like so-called our people to implement. And this has been a fight for many, many years. We are talking about independence. What sort of freedom we have if you don't even have certain things being, And the second thing, we also need respect, the dignity, the worth of a human being. Not as a Dalit, not as a Hindu, not as a Muslim or Christian, but the respect that we need to have today, the new education policy that is implemented in most of the Christian institutions and other things. You must be thinking I'm focusing on Christians, but even in private institutions, when we are talking about, all this 200 rupees paying and getting admissions and all, these are okay to speak on the podium like this. But I think when it comes to implementation, there are a lot more we really need to look into and see as to how we can. And this is another thing that I also want to say. Recently, all of us, the entire nation of India has focused on Manipur. The ethnicity violence that has taken place is nothing to do with Hindus or Muslims or cookies or Metis or anything of that sort. But why such a silence? If all of us to be considered as citizens of one particular nation, and if we are talking about constitution as our right, and its fundamental things to be implied and applied to every citizen, I suppose all of us have equal amount of justification as to why certain things are allowed on certain communities and not everybody else. And recently also we have a lot of atrocities taking place. Some of the speakers have spoken about SC/ST atrocities happening in Telangana and other places. What I want to say, if my wife, my daughter, my sister is being paraded naked, raped, burnt alive, will I be silent? This is not for anybody to answer. It is for an introspection of each one of us. It is today they, it can be tomorrow we. And there are a lot of atrocities happening already against Dalits, and we need to be cautious as to what we actually want to demand. One thing to be on paper, one thing to be a policy, another thing to be really implemented. Finally, I want to say there are a lot of suicides happening in the education institutes of the Dalit students. A lot of suicides. You know what the data, I don't have to say, including the Nizam College, which is in Telangana. I suppose we need security, we need an assurance, not just the government, but all of us as Dalit community to voice out and collectively to respond. I wind it up with this, that the amount of corruption that's taking place in the name of policies, in the name of implementations, is another area where all of us need to give a thought to it. And all of us should be aware of what we as the Dalit community need to be. Thanks for this, and thanks for this opportunity. God bless. Now Gurmesh from Punjab, next Ajay Kumar from Andhra Pradesh. कॉमरेड, प्रधानगी मंडल, डायस पर बैठे हुए और नेतागण और साथियों, मैं कुल खेत मजदूर यूनियन की ओर से इस सम्मेलन में अपनी बात रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये जो आज सम्मेलन का आयोजन किया है, मैं उन सभी साथियों का, प्रबंधकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। यहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब को एक बहुत आगे बढ़ा हुआ
स्टेट माना जाता है। पंजाब में 34%, 34% दलित लोग रहते हैं। पंजाब में अभी ये जो कानून है पंचायतों का, पंचायत में दलितों के हिस्से की 1/3 हिस्सा ज़मीन, वो अभी तक पंजाब के दलितों को गांव में नहीं दी गई। उसके लिए लोग लड़ रहे हैं, संगठन लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार वो कानून को लागू करने के लिए तैयार नहीं। जहाँ तक जब वो नीलामी होती है तो जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं वो गरीब लोगों, दलित परिवारों के नाम पर ज़मीन ठेके पर ले लेते हैं और वो उनको कोई फ़ायदा नहीं, गरीब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब में अब भी थोड़े दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, एक एमएलए बलाचौर की वो किसी गांव में किसी काम के लिए गई। वहाँ की सरपंच जो दलित थी उसने उसको बर्फ़ी का टुकड़ा खाने के लिए दिया, तो वो जो महिला एमएलए है उसने उसको नीचे फेंक दिया। ये पंजाब की बात है। पंजाब में अभी ऐसे लोग हैं बहुत बड़ी गिनती में जिनके पास घर नहीं है, या जिनके पास घर हैं तो बहुत तंग गलियों में वो घर हैं। वहाँ रहना आदमी का तो क्या, इंसान का तो क्या, पशुओं का भी रहना दरकिनार है। ऐसे घरों में लोग रह रहे हैं। अभी हमारे लिए ये एक और मुश्किल आ रही है, जब हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं बाहर अपने काम के लिए जाती हैं, वो घास लेने, कोई और चीज़ लेने, चारा लेने, तो उनको ऐसी बातें कही जाती हैं जो कोई आदमी सुन नहीं सकता। ऐसी बातें अभी भी पंजाब में कही जाती हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, संयुक्त रूप तौर पर भी, अकेले भी हम लड़ रहे हैं। और इसके साथ में दूसरी अगली बात जो कहना चाहता हूँ कि ये जो ठीक कौर सुभाषनी अली जी ने कहा है, हमारी लड़ाई का हिस्सा रहना चाहिए जब तक हम उन फिरका प्रस्त ताकतों, फाशीवादी ताकतों को के विरोध में लोगों को, अपने दलित लोगों को, दूसरे लोगों, कृति लोगों को नहीं उठाते, तब तक ये लड़ाई हमारी, रास्ता हमारा ठीक तरफ नहीं जाएगा। इसलिए हमें वो डालना होगा कि हमने इन ताकतों के विरोध में, मनुवादी ताकतों के विरोध में कैसे लड़ना है। और उसके साथ ही मैं आखिर में अपनी जथेबंदी की ओर से, पंजाब की जथेबंदी की ओर से जो भी कार्य निकाले जाएंगे यहाँ, वो हम अपनी जथेबंदी की ओर से भी दूसरी जथेबंदियों के साथ मिलकर उनको, संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। Ajay Kumar from AP. Now, Andhra Pradesh, just I want to bring an important issue, and also why I am sharing is that you may reflect what is happening in other states. So the issue is about the implementation of SC/ST Atrocities Act. Previously, when FIR was registered, immediately the accused sent to the custody, judicial custody. So at least they will get bail after 1 month or 2 months. So this will work as a kind of deterrence. But recently some changes took place. After the CRPC 41 amendment, when the crime was registered, that crime is the punishment is less than 3 years, the accused will get the station bail. Only more than 7 years crime,
the accused is taken to the judicial custody. So then what is happening in SC Atrocities Act? Most of the cases registered, technically if you see, the punishment is there lower than 3 years. So because of this change in CRPC 141, the accused are getting station bail. And I will give you one example. In Anakapalli district of Andhra Pradesh, there is a village called Gunti, and the Gunti is the Kondadara tribes. 2009, a non-tribal attacked the tribals. A case was registered, but they got the station bail. And this year May, the same people attacked the same Kondadara Adivasis. The FIR was registered. They got the station bail. In this month, they sprayed the poison, which is herbicide poison, on the field of the Adivasis. With great difficulty, we able to register the FIR. Still, they will get the station bail. So the deterrence of the SC Atrocities Act was lost. Forget about the case, adjournment, other things. Even in the FIR also, they will get the station bail. Another point I want to bring your notice, to register a case, we should go to the station, DSP office, CI office, and 161 statements, all things. The tribal was, or Dalits were be, they didn't get a water or food. The DSP inquiry, it will take 3 hours, 2 days or 3 days. After all this process completed, simply the non-tribal or non-Dalit will, the SA will call them in their comfortable time. Just they will go with a laughing face, and they put the signatures and come back. So this is the very important change after the CRPC 41 took place. So what's our demand? And one more thing, in Andhra Pradesh government, interestingly amend the excess crime. If a person caught with 4 quarter bottles brandy, cheap liquor, it's a 7 years imprisonment. They changed the law. If the person caught with a country-made liquor, forget about the quantity, even a small bottle, it's an imprisonment of 7 years. So they will not get bail. So if you see, 4 bottles of country-made liquor affected Dalits. That's the point I want to bring your notice. Now we're going to lunch. Time 2. We'll start 3 o'clock. So lunch serve here, that side. తెలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు డెలిగేట్స్ 2వ బ్యాచ్లు వెళ్ళాలి. బయట కొంచెం టైట్గా ఉంటుంది. మిగిలిన డెలిగేట్స్ ముందు వెళ్ళాలి. సో లంచ్ బ్రేక్. తెలుగు తెలంగాణ, ఆంధ్ర తెలంగాణ ఎక్కడే కూర్చోండి. మీతో కొంచెం మాట్లాడేది కూడా ఉంది.